उनका स्टेटमेंट था कि in my office if the telephone rings more than 3 times the telephone operator is fired and these are days when वो EPBX system ऐसा वाला यूज करना पड़ता था. 3 rings is the maximum we give. उसके बाद नॉन प्रोफेशनल. हमारे ऑफिस में कितनी कभी कभी टेस्ट करना चाहिए, बाहर से अपने ऑफिस में कॉल करना चाहिए. खैर मोबाइल का जमाना आ गया तो चीजें बदल गई है, पर फिर भी बड़े कॉर्पोरेट्स में जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है लैंडलाइन पे काफी कॉल आती है. What clients patient here when they placed on the hold, I just talked about this. Time taken and the way the phone is answered, reception area, staff uniforms, aesthetics. Well, you walk into so many good hospitals today. I'm talking good meaning not the workers and the Alexis who put all these things in place, but the doctor is very well known. He's very competent. और आप जब उनके रिसेप्शन में जाते हो तो आपको टोटल कियोस्क का माहौल नजर आता है. सीट्स टूटी हुई हैं क्योंकि डॉक्टर के लिए वो ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है. वो शायद वहां से एंटर भी नहीं करता, वो पीछे से कहीं से आता है और पीछे से कहीं से चले जाता है. This is the worst you can do. In fact, if I walk into my own office, I will not see a lot of things because I've seen them every day makes it completely non-visible to me. I'm blind to them. I'm blinded to them. So walk into a place, your own place, in it like with virgin eyes, and you will see a lot of things that a new guy should see, and they should all be properly organized. And then it goes for your uniforms. Staff should be given uniforms, definitely yes. All the kinds of aesthetics we are talking about. The waiting time. हैंडलिंग ऑफ बिलिंग्स एक्सेट्रा बहुत क्रिटिकल इशू हो जाता है ये भी. तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं. आपका खुद का जब आप बात कर रहे हो अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से मिल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अटायर, आप पर एक दो एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा जो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनके मैं नाम नहीं लूंगा. आई अनफॉर्चुनेटली हैड वन ओनली. मेरी जिंदगी में एक ही लीगल केस हुआ था और मुझे उस लॉयर, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है वो, उसके साथ बैठना पड़ा था. उसकी स्टाइल ही अलग है दुनिया में काम करने का. मैं ही इज ऑलवेज ऑन द लैपटॉप एंड फोन्स. He's talking to you while sending forwards on WhatsApp. He's talking to you and he's working his Facebook. You can see that he doesn't make two words about it. He's doing everything. But he is so competent that he is able to give you all that you desired and more while doing this. I can't name it. Some people may have understood. Right? So, वो एक अलग exceptions always prove the rule. But then अगर आप ये करोगे, मैं ये करूँगा, client सामने बैठा है और मैं Facebook खोल के कुछ कर रहा हूँ, WhatsApp कर रहा हूँ बैठ के, you cannot be perceived as a professional, period. There is no way. So these things are seem small, but they make a lot of impact. Or the enthusiasm of the staff itself. हम लोग staff में invest नहीं करते. एक और बहुत बड़ा problem हमारा ये है. We try and pick up as we tell our clients as consultants to do it, but ourselves we try and pick up the least costing people in the world. No, this thing on. और कोई भी इशू पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ. हम एक ही चीज देखते हैं, सैलरी पास ड्रॉन 15,000 छोड़ना यार, 8,000 बिठा दो सामने. एंड देन वी इन्वेस्ट जीरो इन ट्रेनिंग, जीरो. जबकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी, इनफैक्ट आई जस्ट स्पोक अबाउट द इनिशियल में जैसे मैंने बात क्यों की थी म्यो की. नो एम्प्लॉय इज एबल टू अलाउड टू स्टेप इनटू द place where he's supposed to work before undergoing a complete induction program, going through that book, the Mayo model of practice or whatever, and being thorough with it, role plays done 10 times, and then completely convinced, and then brought it. So, इतना नहीं, हमारे लेवल पे भी कुछ तो ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए, right? देखो, a brand is a promise given from top to bottom, from the CEO of the company to the peon of the company. He is equally your brand messenger, ambassador, whatever you call him, like you. So if you move around in big cars, swanky cars, dole out good visiting cards, send out impressive, expensive folders, etc. But on the other hand, your staff is not trained. It is not the staff's fault. It is your fault. It is your fault. How many of us? One thing that we need to do is immediately we can do. If we have staff, have competent staff, have trained staff. Invest in training. And most of this training can be delivered by you directly. You don't need to get external trainers. Now, something to take away. यहाँ से, I'll give you 6 business strategies you can deploy from tomorrow. Some may know about it, some may not. There are 2 kinds of businesses that you're going to always look at. One is my existing clients, which is also a source of business for me, source that. And the new clients that I want to solicit, which is also going to be a source of revenue for me. So 2 clear sources of business. One is existing and one is new. अब हम लोग जैसे मैंने बताया, we spend 6 to 10 times more money getting a new client. So always believe that your existing client is a gold mine and treat him that way.
उसके बाद समय बचता है, कुछ होता है तो नए बिजनेस। हम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर उसको छोड़ के बाहर भागते रहते हैं। उसका काम थोड़ा डिले होकर चलेगा, वो आज उसके साथ मीटिंग है, नए क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पुराने क्लाइंट को छोड़ दिया हुआ है, वो बेचारा झकोले खा रहा है इधर उधर। इट हैपेंस एवरी सिंगल डे इन आवर ऑफिस। और हम नए बिजनेस के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं। We are creating bad word of mouth, we are losing clients, all that is happening all the time, reaching away, and we are running after new clients. So only when your existing base is really satisfied, you've delegated enough, you've given them sufficient time, etc., look out for new clients. Otherwise, till then, don't look out for new clients. Now, there are two strategies that we've got for new clients and 3 for existing clients. Can you see this? सबको दिख रहा है? हाँ, मैं पढ़ के बता दूँ आपको? Actually ये लाइट बंद हो गई। Okay, एक और क्लिक कर देता हूँ मैं फिर आपको। ये सबने भर लिया? Everyone got this sheet? पहुँच गए सबके पास? हाँ, कोई भी नहीं होगा तो प्लीज भर के जाना। Okay, so this side is new clients, this side is existing clients. There are two strategies for new clients within my brand. Brand has to encompass everything, okay? And 3 for existing clients. So 3 for existing clients are first super pleasing. Why, who, how, I'll tell you in a minute. Super pleasing, nurturing, and listening. 3 strategies here. 2 for new clients, courting and broadcasting. Broadcasting हम लास्ट में पूरे डिटेल में लेने वाले हैं कि आप कैसे अपने आप को मार्केट करोगे. That is broadcasting. But here people don't focus on this. This is a critical part of the brand, as I said. From the point of view of word of mouth, which gets the maximum number of clients for practicing professionals, we need to focus on this. All right. So this we want to talk about, and then we'll move towards broadcasting. So we start with super pleasing. Everyone got this? What is the third strategy, sorry? Where? Which one? For the existing clients? Existing listening. Listening के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, because that has to come naturally to a good impression. अब इसमें से जो 2 आप देखेंगे, the highest rate of return on investment you're going to get is on super pleasing. And it goes for wives also. Huh? If you super please your wife, your ROI will be highest. You go out and do that externally, you're going to be a loser. Right? So मैं इसलिए सब चीजें बोल रहा हूँ, दिमाग में कहीं वो जुड़ जाती है ऐसी हाथों के साथ, तो याद रहती है, नहीं तो अकेडमिकली हम भूल जाते हैं वो. सुपर प्लीजिंग, think of a wife. हाँ? अब नर्चरिंग के साथ मुझे नहीं मालूम, मैं बोलूँगा नहीं. Nurturing is broadcasting is the lowest rate of return on investment. Why? Because it's spending something on trying to get more leads, funneling them in, filtering them, and converting probably 10%, 5%. So you're spending on so much and finally converting 2 or 3%. वो भी बहुत high है. But you need to keep constantly doing this because lifeblood भी organization का नए clients होते हैं. So highest ROI, super pleasing, lowest ROI, broadcasting. In terms of broadcasting, the lowest ROI, in fact, in case of practicing professionals, may not be really money terms, but in times invested terms. Because when you're going out looking for new clients, your time value has to be taken into account also. So there probably your ROI is going to be lowest. Super pleasing. There are 2 kinds of clients you need to really super please. One, of course, your existing big clients who are your biggest revenue sources. Now all of us have been taught, I don't know, कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम हो इसलिए बात, आपके existing जो clients हैं उनको आप कभी भी categorize करो. So A+, absolutely. Good clients in terms of money, in terms of profitability, in terms of future prospects, etc., etc. A, B, C. Similarly, C is the clients, who are not very profitable, don't hold a future potential, so etc. Some clients may not be very profitable today, but they could be very future potential clients. There you need to super please. So your super pleasing effort should not be general and across the board because it costs money and time. Your super pleasing effort should be for identified clients who should come into the criteria of either being very revenue oriented for you, very
socially visible themselves, influencers. आप समझ रहे हैं? मैं एग्जाम्पल नाम के साथ नागपुर की नहीं दे सकता हूँ। एक नागपुर में आई क्लिनिक स्टार्ट हुआ था। उस आई क्लिनिक के जो सर्जन थे वो बाहर से स्पेशलाइजेशन करके नागपुर आए थे। उनका नागपुर में बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं था। फॉर ऑल हिज स्टडीज एवरीथिंग ही वाज इन द यूएस। ही स्टार्टेड दिस एंड ही वाज अ फ्रेंड एंड ही वाज ऑफ कोर्स वांटिंग टू बिल्ड हिज प्रैक्टिस। सो आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू वन ऑफ द मीडिया ओनर्स ऑफ नागपुर। उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम थी किसी के, उनके ग्रैंडफादर के आंख में, तो मैंने उनको वहाँ रेफर किया, कर दिया। अब देखिए लिंक कैसे काम करता है। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं 20 years ago. Then from there he gave them super pleasing service in every which way you can name. Okay, he was a owner of a newspaper. उनके दादाजी, okay, आप गेस कर सकते हो, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और उसके बाद वो इतने उसको super pleasing किया कि then his articles started appearing, speeches started appearing in that newspaper. The entire family started going, and based on that he built a huge practice based on that one initial contact. So therefore सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे नजर होनी चाहिए, और उनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं उसकी हमारे पास क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंसर हो सकता है प्रॉफिटेबल नहीं हो, आज बड़ा बिजनेस पोटेंशियल नहीं हो, जो भी हो, बट इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, इज दैट क्लियर? हु डू यू सुपर प्लीज? What is super pleasing? Very simple, exceeding the client's wildest expectations so that they go out of their way to recommend you to others. Very simply. यानी वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कुछ ऐसा दे दो कि वो लोग ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा ये यहाँ से उम्मीद है ये आएगा, ऐसा कुछ होगा, हाँ। एंड देन व्हाट हैपेंस इज ह्यूज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। किनको किनको? एग्जिस्टिंग हाई रेवेन्यू क्लाइंट्स, don't take them for granted, never ever take them. If you have Aishwarya Rai as a wife, never take her for granted. Get the idea? Be on your toes always. I'm sure Abhishek is, right? And those who will influence the market tomorrow. You have to be always on it, right? Okay. Super clean, simple ideas. Unexpected, unsolicited value delivered through maybe a research report. We have done this in our own case. A client who was potentially big, at that point not very big. We conducted, and it was a slight expense for us, but we picked up a few people from business schools. We did a market research in Nagpur city and part of Vidar for him, without his calling for it, without even knowing about it that we are doing it. We did the analysis, we prepared a report, and we submitted the report to him in a nice, good looking brochure and with a small presentation along with it. The client was floored for life. Still our client. And name nahi le sakte hum, but just giving you ideas. Now, he was not expecting us to do that. Was not a part of our brief. There was nothing. But we felt that going forward, having this kind of information would give us a competitive advantage against the competition getting into the place. Can't this be done by everyone, including a lawyer? Future pitfalls that you might have in your business, in legal frameworks. Make a report. Time investment only. Send it to the client. Explain it to him a little. There you have it. You have got a competitive advantage now. You built a barrier through which the competition right now cannot get. But then, as I said, every new thing has to be constantly exceeded. उसकी expectation भी बढ़ती है ना मेरे साथ में. So करना सोच के किसके लिए कर रहे हो, कितना कर सकते हो. Don't go all out and do it for everyone. Are we clear? Another way, premium tickets to some place that you can't afford and go also. Buy it, send it to the client. कर सकते हैं? Doable? आपकी भी हिम्मत नहीं होती कई बार वो चीज करने की खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, पर क्लाइंट बहुत पोटेंशियल है, आपका दोस्त बन गया है, करो, go out of your way, spend, invest. Box of chocolates and flowers and anniversaries and birthdays now become common, but once upon a time it was not so common. In fact, I remember, मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैंने ये सब पढ़ा नहीं था, बट कुछ चीजें कैसे तो भी होते जा रही थी अपने आप. This is about, we had a Bombay office then. My first cousin used to look after that office. Nagpur में, it was still not very prevalent to send out New Year के first को flowers and ये कोई नहीं करता. He was coming for New Year, so I asked him कि एक काम कर, ताज chocolates नई आई थी उस समय, ताज की chocolates.
Our brand was big. Now you want to make a big brand associated with a big brand. Basically, okay. I didn't know this. I was doing it on the fly. I said 25 डब्बे वो लेके आ. Very expensive because he was coming. तो बोला खराब नहीं होंगे, आ जाएंगे. Very expensive. I paid through my nose. I couldn't afford it at that point in time. I was small, and I sent out to all existing high-level clients of mine and some influencers. I can't tell you the kind of buzz I got. So you have to constantly think out of the box and outdo yourself. Now this may be very commonplace today. It wasn't then. So everything that is new that you do today, 2 years down the line will become commonplace. You will have to think up. You constantly to be on a bicycle. You stop pedaling for a while and you're going to fall. It isn't what you do, but how you do, the way you do. सभी लोग वही चीज करेंगे एट द एंड ऑफ द डे. एक डेंटिस्ट दूसरे डेंटिस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा शायद. ओके, एक लॉयर दूसरे लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे. The whole, I'm again and again coming back to, in our case, intangible experience. The experience is what matters. Delight is equal to perception minus expectation. यानी the expectations being exceeded, the perception is going to increase. Perceptions are created by experience. So your perception always has to be bigger than your experience, and that will only happen when consistently you invest in experience. You know, because client को हम दे क्या रहे हैं at the end of the day? Competence है, agree, but उसके beyond जो चीजें हैं वो experiential है, वो बहुत positive होनी चाहिए. हाँ, क्या बात कर रहे हो? Okay, most of us deliver the same technical excellence. Top ranking में अगर हम बात करें, what can make a difference is only the experience. इंटीरियर की बात करो, आप आर्किटेक्चर की बात करो, कोई भी टेक्निकल वो more or less आ जाएगा, ठीक है. टॉप 5-10 में वो आ ही जाएगा सेम लेवल. उसके बाद क्या है? एक्सपीरियंस. Technical excellence is expected. If you are not providing technical excellence, why are you there? Okay, it's a service that is the differentiator. एंड सुपर बेसिक आइडियाज. ये आपकी किताब में आप लिखोगे कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में, ये नोट कर लो प्लीज, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं, पहले सेगमेंट कर लो किसको सुपर प्लीजिंग आइडियाज देना के लिए, सुपर प्लीजिंग एक्सपीरियंस देना है, एंड देन 5 ideas for that which are out of the box, which have not been done maybe, which you can on your based on your competence can offer, and then select at least 2 of them which you can commit to, and you will do it. Doable by everyone? होगा? पक्का करोगे ना? मैं भी उसमें देखा सुपर प्लीज करने के लिए, मुझे भी सुपर प्लीज करना. Alright? This is an exercise. Again आज यहाँ पे करने का समय नहीं है हमारे पास. Nurturing very quickly. Nurturing किसके लिए था? Nurturing, finding more business from existing. जो वो business दे रहे हैं हमें, क्या और areas available हैं जो वो कहीं और जा रहा है वो business which we can cross selling जिसे बोला जाता है, या जैसे हम लोग for example we were into normal advertising and then we saw the opportunity in digital. We did last digital का मैंने presentation कब किया था? 6 years ago. 5 years. 4 साल तो हो गए. So before that I went to Bombay, did a 2-day workshop with one of the best in the country. I spent about then 40,000 rupees understanding digital and started digital here. And then digital was a new thing, even clients के लिए नई चीज थी. So we started nurturing existing clients to flow their digital business to us. And most of our clients today, digital clients today, are our existing print clients or earlier clients. So nurturing is that, getting those chunks of business which today from your own existing clients go out to others. Can you look at which are these and how they can be converted? Because कभी भी existing client का नया business cost of acquisition बहुत low रहेगा, and सब कुछ मालूम है आपको, उनके प्रोसेस मालूम है, उनकी बिलिंग मालूम है, उनकी पेमेंट मालूम है कैसे होती है, उसके डोमेन में एक्सपर्टीज आ चुकी है, आपको विश्वास इसलिए आप उसके साथ हो अभी भी. ऑल दीस थिंग्स वर्क इन योर फेवर. एंड टैक्टिकली बिल्डिंग अवेयरनेस एंड ट्रस्ट अबाउट न्यू ऑफरिंग. उनको सिर्फ पता चलना चाहिए और उनको विश्वास होना चाहिए कि ये भी चीजें उतने ही अच्छे हैं जो एग्जिस्टिंग में थे, और इसके लिए हो सकता है इनिशियली कुछ प्रो बोनो वर्क करना पड़े. प्रो बोनो मतलब कुछ फ्री एक्सपेरिमेंट्स करके देने पड़े. दैट्स ऑल. सो यहाँ पे आप अपने लिए फिर से एक बनाए 5 नर्चरिंग आइडियाज फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स.
5 ऐसी जगह है आपके क्लाइंट्स है जिनसे आप कुछ एडिशनल डोमेन का बिजनेस ले सकते हो जो एग्जिस्टिंग है उसके अलावा, और उसके लिए क्या करना हो। ये आप सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई नहीं बोल सकता मेरे बिजनेस में नहीं होता है। ठीक है, नजर बहुत सारा होमवर्क मिलेगा आपको, बड़ी आपके काम में आने वाले है। चलिए आगे। लिसनिंग पे मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े बनते हैं कंसल्टेंट, वी बिलीव इन टॉकिंग 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 एंड नॉट लिसनिंग टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द डिसोसिएशन बिगिंस। That's where disassociations begin, because we try forcing our own opinions, because we've spent 30 years in the industry. It happened with me, and therefore, oh, client is a startup, and you say, hey, look, but we don't understand. Things have changed, domains have changed, and the whole ecosystem has changed. You need to listen, and the clients love the people who listen. So listening पे ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ. You understand, please? Huh? Quoting, another important. किसके लिए है? Good, you will match. सिचुएशन आती है कई बार, है ना? कई हर बिजनेस में है तो एक ही क्लाइंट है और एक अनार 100 बीमार, राइट? सो हाउ डू यू स्टार्ट इट्स वेरी मच लाइक द सेम प्रोसेस. हाउ डू यू रियली बिकम द फेवरेट ऑफ द डिजायर्ड पर्सन फॉर whom so many others are trying to solicit. The whole idea is that. So कोटिंग इज दैट प्रोसेस, इक्वेटेड विद दैट एंड यू विल गेट योर आंसर कि क्या क्या करते थे आप उस समय. ठीक है, अगर आपने किया होगा तो. ट्रेडिशनली थॉट ऑफ सेलिंग और प्रपोजिंग टू अ सिंगल न्यू प्रॉस्पेक्ट, बट इज मोर अकिन टू कोर्टशिप नाउ. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम, अंडरस्टैंड. कोटिंग में हम क्या करते हैं, क्या फर्स्ट डे हमको कोई, वो पहले करते थे, पहले के लड़के ऐसे होते थे, समझ में आता नहीं था कुछ. यू सॉ अ गुड गर्ल, कैन आई बी फ्रेंड्स? व्हाई? नो रीजन, राइट? सिमिलरली, can I have your business? Why? I don't know you from Adam. Why should I give my business to you? So then you start the process of quoting. That's what quoting is all about. You try and be visible to that person. Try and attend. I know of a person who ensured बड़ा business, दोनों बड़े business थे, और उसको इसका business लेना था, तो उसने उसके प्यून या के सेक्रेटरी से कहीं से दोस्ती जमा ली थी, और जब जब ये ट्रैवल करता था फ्लाइट से, वो पता कर लिया था. फ्लाइट में दोस्ती कमाई कि उसके बाजू का सीट मिलने को 3-4 बार फ्लाइट में मिल गया, जिससे टकरा गया, दोस्ती हो गई धीरे धीरे. So that's how you have to work, because you're working towards a target. So each one will have to work at his own level of quoting, but importantly you will need to see that you get known to him. You will need to see that you understand him. फ्रेंडशिप होती है, जानते हैं, वैल्यू ऑफर करते हैं कुछ फ्री की, और उसके बाद जाके बिजनेस सॉलिसिट होता है बड़े केसेस में. ऐसे नहीं हो जाता है जस्ट बिकॉज यू आर कॉम्पिटेंट नहीं होगा. दैट गाय एंश्योर्ड ही मेड 5 trips to Bombay without any reason. I know him. 5 trips to Bombay without any reason, because he knew that this is a big client, and वैसे कुछ नहीं हो सकता. He will belong to the same sect, that he will be invited to the same parties, so he had to take this innovative route. There's so much innovation that can be done at every level. All right? And the winner is, कौन winner होता है finally coding में? What I, the client, want is that rare professional who has both technical skills and sincere desire to be helpful and to work with me and my problems. Isn't this what every wife wants? Exactly. वही चीज. तो ये आप प्रूव कर पाओगे तो you won the heart. That's all. इसको फिर बाद में चीजें हैं ब्रॉडकास्टिंग. अब यहाँ पे टेक्निकली हमें ब्रेक पहली वाली लेनी थी. So, broadcasting में the toolkit is traditional and new media. इन दोनों के बारे में बात करनी है. कितने बजे? विदाउट लंच एक्सटेंड करते हैं प्रोग्राम को. नहीं, चाय और नाश्ता है. आई थिंक इट्स हाँ नाश्ता ले लेते हैं ना. हाँ, so जल्दी से we'll take a break here, and उसके बाद में जो अनकंफर्टेबल है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. we'll do some other session for later कभी, पर जो बैठ सकते हैं. I'll try and wrap this up in the next 45 minutes. Is that okay? Are you getting value? Yes. Thank you. आवाज अच्छी है मतलब रुकेगा. प्लीज जल्दी से ब्रेक करके जितनी जल्दी आ सकते हैं we'll start immediately. शॉर्ट मत कर देना.
थोड़ा सा तो दिमाग शांत करने का लिए खाना है यही टाइम कंस्टेंट के कारण कट शॉर्ट मत करना थोड़ा सा पड़ेगा बिकॉज आई डिड एक्सपेक्ट कि इतना लंबा हो जाएगा मेरा मटेरियल तो बना रहा था मतलब ठीक है कवर हो जाएगा पर ये हावी बोलती कम हाफ पे वो एक्चुअली मटेरियल पूरा फुल डे तो अब मैं जरा वो फुल डे नहीं बैठ पाएंगे नहीं उसको 1 घंटे के अंदर फ्लाइट डिले हो जाता है तो रुकना पड़ता है हाँ बस वही समझ के बैठे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वी आर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन यस सर नहीं कुछ लोग जिनको होगा वो निकल जाएंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हार्ड कोड 1 घंटे में रखो अरे हाँ वो राइस ने बना दिया वो नेक्स्ट संडे वैष्णो देवी जाना नेक्स्ट मंडे वैष्णो देवी जाना हाँ हर साल जाता हूँ मुझे वो फिर वो टाइम ही नहीं सेट हो रहा पर बहुत छोटा वर्जन है बहुत छोटा 40-45 मिनट में जो हो जाए आप लोग भी प्लीज प्रतीक कीजिए I understand. He is sacrificing snacks. Yeah, I actually. Seriously, please go. अरे नहीं हो गया अरे यहाँ पे भी कर दो ना फिर आप हाँ तो वो टीम बनवाने का you all can light sandwich संडे का जैसे सर में स्टार्टिंग में बोला ना ठीक है चलिए fine I thought you know मेरे people सब कुछ जाके as you all see now कोई भी नहीं करने पड़ता है अरे सब वही वहाँ जाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं सब मस्ती करते हैं तो क्वेश्चन कर रहा था तो भेज हो गया Dr. Kibe has invited all of us. Oh yes, I'm so sorry. My memory is so bad. Seriously bad. Please,
Basically, the moment Shilpa told me that it's going to happen, we are changing to now this modern practice. Now the one all this is relevant. Where is your उसके नहीं बिल्डिंग में very wide. And it is so expensive and even very rare to India also. City like Bombay only ticket for it. हाँ बस सही क्या अच्छा ठीक है मैं तो अभी हूँ नहीं करता चालू तो एक बार मैं तो फिर मैं उसी हिसाब से खाना भी आएगा हाँ तो मैं हाँ 3-4 रोटी बना देना रात की चावल चढ़ा देना आधा सब्जी बना दे कोई ठीक है मामा आंटी को फोन देना मनीषा आई क्या अच्छा ठीक है ना ठीक है मेरे कल जब ये जाएगी नीचे तो उसी समय आएगी ठीक शादी में हेलो घर में दौड़ में बढ़ती है हाँ नहीं
Repeat.